Yes, today we are going to discuss the venous drainage of upper limb. The upper limb has got superficial veins as well as deep veins. So there are two sets of veins, superficial veins as well as deep veins, which drain the blood from the upper limb towards the heart. Fine. Basically, the superficial veins lie in the superficial fascia, whereas the deep veins accompany the main arteries which are present in the upper limb. First of all, the dorsal venous network. This is a network of superficial veins and it lies in the dorsum of the hand. It is drained on the lateral side, that is towards the thumb, by the cephalic vein, and towards the medial side, that is towards the little finger, is by the basilic vein. ठीक है, तो आप इसको किस तरीके से याद रख सकते हैं? आप देखते हैं कि यहाँ पर ये देखिए, जिस तरीके से मैं लेट मी यूज द पॉइंटर, ये देखिए, ये सी बन रहा है, ठीक है, sort of it is C with index and thumb finger. So the cephalic vein is towards this side. C for cephalic and C for this structure. ठीक है, so cephalic vein is towards this side, towards the lateral side, and basilic vein is towards the medial side. So actually what happens is this superficial network is present in the superficial fascia. But where there are pressure points, for example at the pressure points का मतलब ये है कि जहाँ पे प्रेशर exert होता है, जहाँ पे venous drainage compromise होने का खतरा होता है, वहाँ पे ज़्यादातर superficial network जो है, venous network, वो present नहीं होता. ज़्यादातर venous network present जो है वो dorsal surface पे होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत मिनिमल है. और इसके अलावा आपको पता है कि जो एल्बो से ऊपर वाली सरफेस होती है, जो अल्ना की सरफेस होती है, विच इज सबक्यूटेनियस, वहाँ पर ज़्यादातर प्रेशर एक्सर्ट होता है. व्हेन वी सिट, व्हेन वी डू वर्क, वी यूजुअली एक्सर्ट प्रेशर ऑन दैट सरफेस. देयरफॉर द डॉर्सल वीनस नेटवर्क इज नॉट प्रेजेंट ओवर देयर. ज़्यादातर एंटीरियर साइड ऑफ द फोर आर्म पे आपको डॉर्सल वीनस नेटवर्क नजर आएगा. आप देखिए, डॉर्सल साइड ऑफ द हैंड से इट हैज़ गॉन टू द एंटीरियर सरफेस ऑफ द फोर आर्म. ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है बताने वाली. अब हम स्टार्ट करते हैं किफेलिक वेन से. आपको पता है कि किफेलिक वेन जो है वो इस जगह पे प्रेजेंट होती है टुवर्ड्स द थंब. इट इज टुवर्ड्स द लैटरल एस्पेक्ट and it arises from the lateral side of the dorsal venous network and ascends around the lateral border of the forearm. ठीक है, forearm के lateral border पे ascend करेगी ये, and runs along the lateral border of the biceps in the arm. Then it goes to the, here there would be biceps, and on the lateral border of the biceps the cephalic vein would be there. ठीक है, and on reaching the interval between the deltoid and the, this is the deltoid and this is the pectoralis major muscle, the cephalic vein pierces the deep fascia and joins the axillary vein. ठीक है, एक्सक्यूज मी. हम इसका 3D मॉडल भी देखेंगे, इसलिए ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. फ़िलहाल आप इस पिक्चर से समझ लीजिए और एंड पे हम 3D मॉडल देख के उसको समझ लेंगे. सो किफेलिक वेन कहाँ से राइज करती है? किफेलिक वेन राइज करती है डॉर्सल वीनस नेटवर्क से, और वहाँ से ये अराइज करेगी टुवर्ड्स द लैटरल एस्पेक्ट एंड इट कम्स टू द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म एंड it moves upward to the lateral side of the biceps muscle, and then it, when it comes between the pectoralis major and deltoid muscle, it pierces the fascia and joins the axillary vein. ठीक है, now coming towards the basilic vein. ठीक है, basilic vein is towards the medial aspect, और इसी तरीके से dorsal venous network से ये arise करेगी and ascends to the posterior surface of the forearm and just below the elbow. Here, it pierces and it inclines forward to reach the cubital fossa, which is
the structure which is present here. ठीक है, it comes forward to the cubital fossa and then ascends to the medial side of the biceps. ठीक है, जो cephalic vein है, it is towards the lateral side, whereas the basilic vein is to the medial side of the biceps. Now here you can see that it is piercing the deep fascia and at approximately the middle of the arm, and after which it joins the vena comitanthes of the brachial artery. वेनी कॉमिटेंटी ब्रेकियल आर्टरी की क्या होगी, ब्रेकियल वेन होगी, ठीक है, टू फॉर्म द एक्सिलरी वेन, और उसके बाद ये यहाँ से ज्वाइन होके एक्सिलरी वेन बना देगी, ठीक है. हेयर इट इज फॉर्मिंग द एक्सिलरी वेन एंड हेयर यू कैन सी कि उन्होंने डीप डाउन स्ट्रक्चर बनाया हुआ है. Then we are coming to the median cubital vein. The median cubital vein actually connects the cephalic vein to the basilic vein, and it lies superficial to the bicipital aponeurosis, and the bicipital aponeurosis separates it from the brachial artery. Now coming to the median vein of the forearm. अच्छा, मीडियन वेन पढ़ाने से पहले मैं ज़रा ये देख लूँ कि आप लोगों को समझ में आ रही है. Okay, have you understood about the brachial and the cephalic vein? All right. Are you with me first year? Have you understood the cephalic and the basilic vein? फिर वही आप लोग पेज नंबर के प्रॉब्लम में गिरफ्तार है. पेज नंबर को छोड़िए, फिलहाल इससे पढ़ लें आप. पेज या तो लेक्चर से पहले ढूंढ लिया कीजिए या फिर लेक्चर के बाद. All right, let's move forward to the median vein of the forearm. Here you can see this is the median vein of the forearm. It is a small vein and it arises in the palm and ascends in front of the forearm. ठीक है? It drains into the basilic vein और the median cubital vein. ठीक है, या फिर इसके एक और वेरिएशन ये हो सकती है कि it divides into two branches, one of which joins the basilic vein and it would be referred as median basilic vein and one of which joins the cephalic vein जो कि रेफर हो जाएगी या जिसको हम टर्म करेंगे as median cephalic vein. So any of the possibility can be present in the human body. So here you can see this is the median vein of the forearm. This is the cephalic vein and this is the basilic vein, and this median vein of the forearm is communicating with the median cubital vein. And here you can see that these veins, cephalic and basilic, are rising as an efferent structure to the dorsal venous network. So in the dorsal venous network, there are certain afferent veins which are coming from the digits as well as the thumb and is draining into the dorsal venous network. And then there are efferent veins, that is जो के डॉर्सल वीनस नेटवर्क से अपवर्ड जा रही हैं. आफ्रेंट का मतलब है आ रही हैं टूवर्ड्स द डॉर्सल वीनस नेटवर्क, और ईफ्रेंट का मतलब है यहाँ से एग्जिट कर रही हैं, जा रही हैं अपवर्ड्स. ठीक है, एंड वीनस ड्रेनेज इज ऑलवेज फ्रॉम बिलो अपवर्ड्स. इसीलिए वेन्स के अंदर वैल्व्स होते हैं जबकि आर्टरीज के अंदर वैल्व्स नहीं होते, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से जो ब्लड है अक्यूमुलेट कर सकता है वेन्स में, बिकॉज दे आर इन एन एंटी ग्रेविटी पोजिशन. इसमें जो ब्लड ट्रेवल कर रहा होता है वो it is opposite to the gravity. Therefore, veins have got valves to prevent this, and the venous drainage is also done by the activity of the muscles. ठीक है, अब ये जो सुपरफिशियल वेन्स हैं फोर आर्म की, उस आप लोगों में से बहुत से लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा वेनी पंक्चर जो कैन्युलेशन होती है. इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के प्रोसीजर में
ये veins जो हैं they are very important. Now, the deep veins of the upper limb. The deep venous palmar arches are associated with arterial arches and drain into the deep veins of the forearm. All right. Then the venicomitentes, deep. What are venicomitentes? They are actually the deep veins which accompany the respective arteries. Their names correspond to the arteries through which, alongside which they travel. The two venicomitentes of the brachial artery join to form the basilic vein, and then the basilic vein forms the axillary vein. Now here you can see this is the axillary vein, and here in the lighter color you can see the venicomitentes. ठीक है, यहाँ आपको venicomitente नजर आ रही है brachial artery की, which is brachial vein, and here you can see that it is joining the or draining into the axillary vein. And the axillary vein is formed at the lower border of the teres major muscle by the union of the venicomitentes of the brachial artery and the basilic vein, as you can see here. It runs upward on the medial side of the axillary artery and ends at the lateral border of the first rib. ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ये है जी first rib, this is clavicle and this is first rib, okay, and it ends at the lateral border of the first rib, and there at the lateral border of the first rib it becomes the right subclavian vein or left subclavian vein, as the site determines. The vein receives tributaries which correspond to the branches of the axillary artery and the cephalic vein. So we have learned about two types of networks, venous networks, which are present in the upper limb. There is a dorsal venous network. Dorsal venous network is very important because of the venipuncture procedures or blood transfusions which are done through this. And um, there are deep venous networks, okay? So this is a precise venous drainage of the upper limb. All right, is there any question regarding this, or have you understood that? Then we are going to see the 3D इस तरीके से कुछ venous drainage आपको नजर आएगी 3D मॉडल में. आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त जो आर्म है वो anatomical position में है with the thumb laterally. This is right upper limb and the thumb is laterally, and this is the anatomical position of the upper limb. So the most important is the superficial veins of the upper limb. As I have told you that there are two types of veins, deep veins and superficial veins in the upper limb. And you can see here that the areas where there is more pressure, is exerted. For example, in the palm of the hand, the superficial veins are not that prominent. And also you can see at the back of the forearm towards the elbow region where the pressure is exerted, the veins are not that prominent. So this is a nature's process through which the venous drainage is not compromised in case of continuous pressure on these areas. So here I'm going to maximize the dorsal venous network. You can see that this is the dorsal venous network of the hand, and it is receiving the veins from the fingers as well as the thumbs. So it is receiving the dorsal metacarpal veins as well as the veins from the thumb, all right? And these are the afferent veins to the dorsal venous network. Now the efferent veins of the dorsal venous network are the cephalic vein.
which is at the lateral aspect, as you can see here, and the basilic vein, which is at the medial aspect. Fine. So if we move upward, you can see here that in the forearm, when the cephalic vein comes here, it moves to the anterior aspect of the forearm. As you can see here that it is moving to the anterior aspect of the forearm here. All right. As you can see here that it is moving to the anterior aspect of the forearm, then it is crossing the region of the elbow and it is going upwards, and it will come to the lateral side of the biceps muscle, and then it is going to, when it comes between the deltoid and pectoralis major muscle, it pierces the deep fascia and it then joins the axillary vein here. Fine. So this is the course of the axillary, this is the course of the cephalic vein. All right. Now we are going to discuss the course of the basilic vein. And as you know, okay, let's see the basilic vein. I'm maximizing the area. This is the front or the anterior aspect. We will see it from the dorsal aspect. Okay, you can see here that this is the dorsal venous network, and one of the of efferent of the dorsal venous network is the basilic vein. Fine. You can see here that the basilic vein is moving upwards and it also goes to the anterior aspect of the forearm. I am turning it anteriorly. It has gone to the anterior aspect of the forearm, and then you can see here that it has come towards the cubital fossa, and then again it is on the medial side of the biceps muscle. Here at the middle of the arm, it is going to pierce the deep fascia, and then it is going to join the axillary vein. So the basilic vein becomes the axillary vein. Fine. So this is the course of the cephalic as well as the basilic vein. Ultimately, both of them join, or you can say drain, into the axillary vein. Now here we see that this vein is the median cubital vein. This vein connects the cephalic vein to the basilic vein, and it lies in the superficial to the bicipital aponeurosis, and the bicipital aponeurosis separates it from the brachial artery. All right. Then we come here and we see this one. This is the median vein of the forearm. In certain books, median antebrachial vein is also referred to as the median vein of the forearm. So the median vein of the forearm is a small vein and it arises in the palm, as you can see here, and ascends on the front of the forearm, as you can see here. It drains into the basilic or the median cubital vein. So here they have shown that it is draining into the median cubital vein. It can also drain into the
basilic vein or into the cephalic vein. ठीक है, and it can also join into two branches, which can be like one branch which joins the cephalic vein will be referred to as median cephalic vein, and the other vein which joins the basilic vein can be referred to as median basilic vein. ठीक है, all right, let's see, are you listening or not? All right, यहाँ पे आपको वेन्स समराइज हो गई हैं, समझ में आ गया है. लेट्स सी इट. जैसा कि आपको मॉडल में नज़र आता है, आपके पास कोई सेपरेट वीनस मॉडल नहीं है. आपको मॉडल जो है वो इस तरीके से कंप्लीट नज़र आता है, जिसमें नर्व्स भी होती हैं, वेन्स भी होती हैं, आर्टरीज, मसल्स, एवरीथिंग इज देयर. ठीक है, मॉडल इस तरीके का होता है आपके इंस्टीट्यूट्स में. तो आपने खुद से, जहाँ पे ऑस्पी में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में मार्क लगा होता है जिसके ऊपर भी, आपने खुद से उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये कौन सी चीज़ है, वेन है, आर्टरी है, नर्व है. ठीक है, मॉडल में इट इज़ रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ कलर्स. बट इन केस ऑफ ओरिजिनल स्पेसिमेंस, आप उसकी जो पेलपेट करके उसको अपने थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में जब आप उसको प्रेस करते हैं, तो आपको मालूम हो जाता है ये वेन है या आर्टरी है. जो वेन होती है वो थिन होती है और कोलैप्सिबल होती है, जबकि जो आर्टरी होती है वो ज़रा थिकर होती है एंड इट इज़ नॉट दैट कोलैप्सिबल. ठीक है, all right. So here you can see the superficial venous network of veins in the model of the upper limb. तो यहाँ पर हम इसको टर्न करके देखते हैं कि डॉर्सम ऑफ द हैंड पे मसल्स के समेत किस तरीके से नज़र आता है dorsal venous network. So this is the dorsal venous network which you can see on a complete model, and you can see that um, veins are arising from the digits, and these are known as dorsal metacarpal veins. And there are also certain veins which pierce from the palm, and they pierce the interossei muscles, and then they drain into this dorsal venous network. Okay, here the cephalic vein is present, you can see here, and you can see the course of the cephalic vein in the forearm. Here you can see in the forearm, then in the cubital fossa, and then you can see here that this is the biceps muscle, and it lies lateral to the biceps muscle, and in between the deltoid and pectoralis major muscle, which is not shown in this model, uh, the cephalic vein pierces the deep fascia and goes and join into the axillary vein. Fine. Then in this model you can, I'm turning it again to show you the basilic vein. So here you can see the basilic vein, and it is on the medial aspect of the forearm. Then again it comes forward and it runs upward into the cubital fossa, and it runs to the medial aspect. This is biceps, and it is running to the medial aspect of the biceps, and it is then going to drain into the axillary vein. All right, it is going to pierce the fascia and the middle of the arm, and it is going to join the axillary vein. So here you can also see this is the median cubital vein. All right, this is the median cubital vein, and you can see here this is the bicipital aponeurosis, and this aponeurosis separates the median cubital vein from the brachial artery below. ठीक है, I am going to remove the biceps muscle, and then you can easily see that just beneath it there is an artery.
मीडियन क्यूबिटल वेन अगर मैं रिमूव करूं तो आपको नीचे एक आर्टरी नजर आएगी, दिस रेड कलर विच इज ब्रेकियल आर्टरी. So you can see that this bicipital aponeurosis is separating the median cubital vein from the brachial artery. And I hope this venous drainage is clear to all of you now. ठीक है, डीप वेन्स जो है वो accompany करती हैं arteries को. They are venicomittantes of the arteries, and they all ultimately, whether they are superficial or deep, they enter or they drain into the axillary vein. All right. Is everything clear to you? जी, यहाँ कुछ क्वेश्चंस और कुछ डिस्कशंस चल रही हैं जी कमेंट बॉक्स में. इंडिविजुअल शो नहीं हो सकती, बहुत इंडिविजुअल शो नहीं हो सकती क्या मतलब? फवाद ताहिर, कैन यू एक्सप्लेन योर क्वेश्चन बेटा? Yes, Fawad Tahir, can you explain your question? What do you want to see individually in the 3D model? Yes, Fawad, I am waiting for your response, beta. What do you want to see individually? वेन्स मिक्स हो रही हैं, बेटा कलर चेंज होता है वेन्स का. Okay, I'll try to clarify again. अच्छा जी, अब आप ये देखिए कि ये पार्मर एस्पेक्ट है. यहाँ पे आपको डोर्सल जो सुपरफिशियल वेन्स हैं वो इतनी प्रोमिनेंट नहीं नजर आएंगी. अब हम जाते हैं टुवर्ड्स द डोर्सल एस्पेक्ट, ठीक है. और ये है जहाँ मेरा पॉइंटर है, आप उसको फोकस कीजिए. मस्ट फोकस ऑन माय पॉइंटर, ओके. अब मैं इसको मैक्सिमम मैक्सिमाइज कर रही हूँ. ये है जी डोर्सल वीनस नेटवर्क. ठीक है, अब आप देखिए ये लाइट कलर का हो जाता है, इसके कलर चेंज हो जाता है. दिस इज द डोर्सल वीनस नेटवर्क ऑफ हैंड. यू कैन see it by change of color as well as you can see it with the help of the arrow. ठीक है, इसमें कुछ efferent veins हैं जो कि इससे निकल रही हैं, और कुछ आफ्रेंट हैं जो इसके अंदर आ रही हैं, इसमें ड्रेन हो रही हैं. फाइन. इसके अलावा पार्मर एस्पेक्ट से भी वेन्स पियर्स करेंगी इंटरऑशियाई मसल्स को और इसके अंदर ड्रेन होंगी. फिर आप ये देखिए कि यहाँ पर ये वाली जो वेन है विच इज नाउ टर्निंग लाइटर इन कलर. See, now it is lighter in color and my pointer is also over it. This is what?
This is the cephalic vein of the upper limb. All right. Then this one, which is medially, is the anatomical position में ये medial aspect पे है. This is the basilic vein, which is turning lighter in color. All right. And this one is, all right, this is the accessory cephalic vein, but I didn't want to go to its detail. अब आप चाह रहे हैं कि अब ये cephalic vein भी अलहदा हो जाए, ठीक है? तो अब हमने ये cephalic vein को अलहदा कर दिया है. ये cephalic vein जी आप देखिए कि lateral aspect पे है और ये अब सेपरेट हो गई है और आप देख सकते हैं कि अब आपको सिर्फ और सिर्फ cephalic vein नज़र आ रही है जो कि अब anterior aspect पे आ रही है forearm के, and then it is going to the arm, and then it is going to drain into the axillary vein here. Fine. So this is the cephalic vein. This is the course of the cephalic vein. और मैंने आपको याद रखने का तरीका बताया कि यहाँ इंडेक्स फिंगर और थंब के दरमियान में सी बनता है. तो आप इससे याद रखिए कि cephalic vein इस एस्पेक्ट पे होती है, लैटरल एस्पेक्ट पे होती है. ठीक है, cephalic vein नजर आ गई है इंडिविजुअली. ओके, अब मैं बेसिलिक वेन जो है उसको मैं सेपरेट करती हूँ. दिस इज द बेसिलिक वेन विच इज ऑन द मीडियल एस्पेक्ट. और मीडियल हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम एनाटॉमिकल पोजीशन पे रखते हैं तो ये लिटिल फिंगर की तरफ होती है. ठीक है, पीछे से अब ये आगे आएगी एंटीरियर एस्पेक्ट पे. इट इज coming towards the cubital fossa, and then again at the middle of the arm it is on the medial side of the biceps, and then it is going to pierce the deep fascia and it is going to drain into the axillary vein, which is now not shown in here because this is only the basilic vein. ठीक है, basilic vein नजर आ गई. अब हम आपको दिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ मीडियन क्यूबिटल वेन. ये एक मीडियन क्यूबिटल वेन है जो कि क्यूबिटल फॉसा में प्रेजेंट है. इसके नीचे लोअर एस्पेक्ट बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस होता है और वो बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस इसको ब्रेकियल आर्टरी से सेपरेट करता है. और ज़्यादातर आप देखेंगे कि कैनुला जो है, कैनुलाइजेशन, कैथेटराइजेशन जो है, कैनुला इंसर्ट होना या वेनी पंक्चर्स जो होते हैं वो इस वेन में हो रहे होते हैं. ऑल राइट, ये है जी मीडियन क्यूबिटल वेन. अब ये है मीडियन एंटी ब्रेकियल वेन या कि फिर मीडियन वेन ऑफ द फोर आर्म. और अब हम इसको अलहदा कर लेते हैं. दिस इज द मीडियन वेन ऑफ द forearm at the anterior aspect of the forearm, and it drains into the median cubital vein, or it can also drain into the cephalic or basilic veins. ठीक हो गया? मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा डिटेल से तो नहीं बताया जा सकता. Yes. Is it clear to you now, Fawad, and rest of you? Yes, beta, is it clear to you? और यहाँ पे जो फवाद के कमेंट पे रो रहे हैं और हंस रहे हैं उनको भी क्लियर है? Yes, I am waiting for your response. Okay, it's clear to Ikra. What about the one who asked the question? बिल्कुल अबू बकर, cephalic और basilic vein दोनों अल्टीमेटली और इवन द डीप वेन्स वो सब जाके अल्टीमेटली एक्सिलरी वेन में ड्रेन करती हैं. Yes, any other question?
Ramisha, yes, it can divide to form the median basilic vein and median cephalic vein. We are talking about the median vein of the forearm, or it can just drain into the median cubital vein. So there are variations present in the human body regarding the median vein of the forearm. Yes, okay, all right. I hope everything is clear to you as is evident from your comments. Okay, till then, take care of yourself and your families and remember me in your prayers. And Allah Hafiz.